Everybody, in the last video of mine I discussed this sales ledger control account. इसी का question जो था वो part A में there were two things. One was the sales ledger control account and the other was the purchases ledger control account. And I told you one thing, that information को पहले जो है ना read करके आपको जो है वो you should just classify कि क्या चीज़ कहाँ जाएगी. So if they're asking for two control accounts, you should know कि sales ledger control account में all the customer related information, purchases ledger control account में all the supplier related information. So you obviously आपके जो purchases ledger control account का balance है, that is important. And then we have this credit purchases, because of credit purchases your supplier is created. Credit suppliers जो होते हैं वो लोग होते हैं जिनसे आप उधार पे purchases खरीदते हैं. And then you don't pay right away. You promise to pay at a future date. Okay, so credit purchases is important. Cash purchases is not important. I highlighted that in the other video of mine as well. That जैसे cash sales does not come in the sales ledger control account. Cash purchases does not come in the purchases ledger control account because cash purchases से supplier create होता ही नहीं है. ठीक है. क्रेडिट सप्लायर ओनली एंड ओनली क्रेडिट परचेजेस से होता है. देन रिसीट्स फ्रॉम कस्टमर्स हम उसमें ले चुके हैं सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में. पेमेंट्स टू क्रेडिट सप्लायर्स, ऑफ कोर्स हम अपने जिनसे हम खरीदेंगे उनको हम पे भी करेंगे. तो दिस इज गोइंग टू गो इन द payments to credit suppliers will go to the purchase ledger control account. Then discount received, when you pay your suppliers and when they give you a discount because you're paying on time, that is discount received, तो वो भी आएगा यहाँ पे. And then we have this okay, so if interest is charged by the supplier on our overdue account, that will come in the purchases ledger control account. But this interest charged to a customer on an overdue account is charged to a customer, so we are charging it to a customer. So this obviously has been taken to the sales ledger control account, so this will not come here in the purchases ledger control account. And then contra, I mentioned this in my other video as well, कि contra वो होता है कि कोई एक बंदा आपका supplier भी है, वो आपका customer भी है. ठीक है. So in that case, let's say Mr. A, okay, let's say I'll take an example of myself here so that you know students can understand this better. So let's say my Mr. A is, so this is Shayan's sales ledger basically, और इसमें Mr. A का T account है और Mr. A को मैंने sales की है, let's say मैंने की है 1000 की sales Mr. A को. ठीक है. इसी तरह शायांस परचेजेस लेजर में दिस इज शायांस परचेजेस लेजर and then you have the account of Mr. A in this, and now I have purchased goods from him, let's say 500K. ठीक है. तो मैंने उसको सेल्स 1000 की है, उससे परचेजेस 500 की है. तो नोटिस हियर दिस, ये हम एवरी डे करते हैं, एवरी डे वी आर डूइंग इट विद आवर फ्रेंड्स, बट वी डोंट रियलाइज इट कि मैंने उसको सेल्स 1000 की है, मैंने उससे ख़रीदा 500 का है. तो इसका मतलब नाउ ही हैज़ टू पे मी 500. ठीक है. बिकॉज मैंने कम ख़रीदा है उससे और मैंने उसको बेचा ज़्यादा की वैल्यू की चीज़ है. ठीक है. सो व्हाट यू विल डू इज़ that here you'll write purchases ledger. So this is the contra thing happening here, 500, and then here you'll write sales ledger and you will write 500 here, and then your Mr. A will basically pay me, so I'll debit my bank in the bank account in the cash book and I'll write bank over here and I'll write 500. So this is actually what I'm receiving, this money is what I'm receiving. कॉन्ट्रा जो है ना वो ये है. सो बेसिकली इट इज़ लाइक यूर राइटिंग ऑफ सेटिंग ऑफ बेसिकली इंटर लेजर सेटिंग ऑफ है. ठीक है. कोई एक बंदा आपका कस्टमर भी है और सप्लायर भी है. सो इन दिस केस बेसिकली कॉन्ट्रा गोज टू बोथ परचेजेस लेजर कंट्रोल अकाउंट एंड सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट. तो इसको हम यहाँ पे इसमें लिखेंगे. So just let's make this purchases ledger control account. तो सबसे पहले हम इसका start करते हैं with the credit balance brought down. Also one more thing to note here is that sales ledger control account is a total of trade receivable account. Purchases ledger control account is a total of trade payable account. Trade payable, the word payable itself tells you कि मुझे इसको pay करना है. Basically the business has to pay that person.
So trade payable is a liability. Liabilities have a balance brought down on the credit side. Assets have a balance brought down on the debit side. तो हमने अपने सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में बैलेंस ब्रॉट डाउन जो है वो डेबिट पे लिखा था, जो ये वाला बैलेंस था. लेकिन अब हम यहाँ पे एंड दे हैव टोल्ड यू एज वेल कि ये क्रेडिट बैलेंस है, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, बट यू शुड नो द इन्फॉर्मेशन, मतलब उसका बैकग्राउंड के क्या है, व्हाई इज इट कमिंग ऑन द क्रेडिट साइड. सो राइट बैलेंस ब्रॉट डाउन हियर and I will write 7700 and the date will be 1st August, so I'll write 1st August. And then purchases, so basically anything that increases my trade payables will come on the credit side, anything that decreases my trade payables will come on the debit side. So if I purchase from my trade payables, so that will increase my trade payable, तो मैं उसको credit side पे लिखूंगी. अगर मैं अपने trade payable को pay करती हूँ या मैं trade payable को कोई goods return करती हूँ, that will decrease my liability, so I will write that on the debit side. So here I will write basically credit purchases, sorry cash purchases, I told you it's not going to come. आप यहाँ पे purchases लिख देंगे, credit purchases, and you will write 55,400, ठीक है. और यहाँ पे हम द डेट, देयर इज नो डेट फॉर हियर, तो ये सारी डेट एक ही चल रही है, इसमें पूरे मंथ का ट्रांजैक्शन हो रही हैं. And then payments to credit supplier. So whenever you pay to the credit supplier, your bank is being credited. This account is being debited because obviously for every debit there is a credit. So अगर एक account credit हो रहा है जो कि बैंक है, तो ये वाला account purchases as a control account, that's the total of trade payables account will be debited. So here I'll write 55,400. And then notice here discount received. जब हम पे करते हैं obviously हमें discount देते हैं if we pay within the time that they specify. So discount received here is 600. Then we have we don't have a purchases returns and we don't have any other information, so we have taken bank, we have taken discount received, and then contra. So contra यहाँ पे ले लेंगे contra, और यहाँ पे मैं लिख दूँगी 2920 एंड दैट्स अबाउट इट, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन है. और मैंने यहाँ पे पहले स्पेसिफाई भी कर दिया था बेसिकली 1 2 3 4 5, और यहाँ पे बेसिकली 1 2 3 4 एंड 5. तो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन ले ली. अब हमने बैलेंस कैरिड डाउन निकालना है, विच इज़ वेरी सिंपल. बैलेंस कैरिड डाउन निकालने के लिए यू ऑलवेज डू टोटल ऑफ द हैवी साइड माइनस टोटल ऑफ द लाइट साइड. सो टोटल ऑफ द हैवी साइड हियर, oops, I have to correct this, the payments to credit supplier is 50,600. So yes, now if you see here, ऐसी गलती आप लोग से भी हो सकती है, तो उसको ना मतलब at the time of balancing, like I had taken this purchases and the bank value was the same, so it just clicked me कि मैंने गलती से गलत ले लिए. तो never mind, let's see इसका balance carried down क्या है. So we'll do 7,700 plus 55,400, that is 63,100 is the credit side, and then we subtract the debit side from it. So 50,600 plus 600 plus 2920 gives me 54,120, and then I do 63,100 minus 54,120, and my answer here is 8,980. So that is the balance carried down, and balance carried down is always on the last date of the month, so 31st August, and that's it. And then you balance this account at 63,100 on both sides, and then this balance carried down will obviously become balance brought down on 1st September, and that's part of the requirement of the question as well, कि यहाँ पे इन्होंने कहा है आपसे कि bring down the balances on September 1, 2021. So you write September 1 here, and balance brought down will be 8,980. And that's about it for the purchase ledger control account. It's pretty easy. So इस क्वेश्चन में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट से रिलेटेड थी, एंड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी थी जो कि आपने नहीं लेनी है.
एक्स्ट्रा दे देते हैं just so that the students get confused. You don't have to be confused. You have to see whether it is affecting my trade receivable or my trade payable or no. If it is not affecting your trade payable, like provision does not affect, provision for doubtful debts does not affect your trade receivable. सही है, तो you don't take that. उसकी डबल एंट्री में ही ट्रेड रिसीवेबल नहीं आता कहीं पे, तो you don't take that to the control account. So here in the next part of the question they are saying name the book of prime entry which Aisha would use. So the point to note here is that control accounts is made, basically control accounts are made using the information from the books of prime entry. ठीक है, so यहाँ पे जो परचेजेस का टोटल दिया हुआ ना यहाँ पे, दिस इज कमिंग फ्रॉम द परचेजेस जर्नल. इसी तरह ये जो बैंक की वैल्यू है जो हमने पेमेंट्स की हैं अपने सप्लायर्स को, दिस इज कमिंग फ्रॉम द कैश बुक. सिमिलरली डिस्काउंट रिसीव्ड का कॉलम कैश बुक के अंदर होता है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड इज कमिंग फ्रॉम द कैश बुक. कॉन्ट्रा इज कमिंग फ्रॉम द जनरल जर्नल बिकॉज कॉन्ट्रा कैन नॉट कम इन एनी अदर जर्नल. सो हियर दे आर सेइंग रिटर्न्स जो हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, एंड दे आर आस्किंग यू कि सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाने के लिए इन्फॉर्मेशन आपने कहाँ से उठाई है. तो रिटर्न्स जो आ रहे हैं वो सेल्स रिटर्न्स जर्नल से आ रहे हैं बिकॉज सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट के अंदर सेल्स रिटर्न्स आता है. सो सेल्स रिटर्न्स जर्नल हियर, एंड देन डिस्काउंट अलाउड इज कमिंग फ्रॉम द कैश बुक. डिस्काउंट रिसीव्ड ऑल्सो कम्स फ्रॉम द कैश बुक. डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड दोनों के कॉलम्स कैश बुक में होते हैं. इंटरेस्ट चार्ज टू कस्टमर ऑन एन ओवर ड्यू अकाउंट will come from the general journal. So why am I saying that? Because in the sales journal you only record the credit sales. In the sales returns journal you only record the returns that are coming from your credit customers. In the purchases journal you record your credit purchases. In the purchases returns journal you record all the returns that you made to the credit supplier. And then in the cash book you have all the bank and cash transactions. In the petty cash book you have small cash transactions, and in the general journal you have all the other transactions that cannot come in the above 6. तो जनरल जर्नल में when you charge interest on the overdue account on the customer, so basically your trade receivable increases, so you debit the trade receivable जो भी बंदा है जिसको आप overdue account पे charge करें interest, and you credit the interest because that's an income. वो customer जो है वो basically they'll pay more than what they are required. ठीक है, so more than what they are required to pay. And contra entry is also coming in the general journal because of course contra entry कहीं और नहीं आ सकती. contra entry basically यहाँ पे जो मैंने पूरा explain किया था कि ये purchases ledger and sales ledger ये जो है ये inter ledger जो setting off हो रही है between those two people, like between someone who's your seller and also your customer. तो इसकी जो एंट्री होती है वो भी this actually the information is coming from the general journal because it cannot come in any other journal. Okay, part C of the same question says that suggest 2 reasons why the sales ledger control account had a credit balance of $420 on 1st August 2021. So if you look here, यहाँ पे एक credit balance था sales ledger control account में, और वो क्यों है? It's like sales ledger control account is a total of trade receivable account, और total of trade receivable account is an asset account. तो एसेट का बैलेंस बड़ा डाउन तो डेबिट साइड पे आता है. बट व्हाई इज द credit balance, why is there a small credit balance in the sales ledger control account? Also this is called a minority balance. So minority balance क्यों होता है, क्यों उसको क्रेडिट साइड पे आता है? So reason, आपका लेट्स से मेरा कोई कस्टमर है मिस्टर ए, सही है, मिस्टर ए को मैंने गुड सेल किए थे 1000 के, and then after a month Mr. A paid me the money $1000, and then after the payment that Mr. A makes, now he realizes that ये कुछ goods faulty हैं इसमें से और उसको वो return करने हैं. तो जब वो goods return करेगा तो at that point अब it's like I have to pay Mr. A because मैंने तो पूरी payment receive कर ली थी. So यहाँ पे हम लिखेंगे when a credit customer returns goods after payment. तो उसने पेमेंट कर ली है, उसके बाद उसने गुड्स रिटर्न किए. द सेकेंड रीज़न कैन बी हियर दैट लेट्स से मिस्टर ए को मैंने 1000 की गुड्स सेल की एंड वो जो है वो मुझे ज़्यादा पेमेंट कर दे, ठीक है, ओवर पेमेंट कर दे. सो व्हेन अ क्रेडिट कस्टमर
overpays the business. तो अगर मेरा कोई कस्टमर मुझे ओवर पेमेंट कर दे, सो नाउ आई एम सपोज टू रीपे द अमाउंट दैट वाज बेसिकली आई नीड टू मेक अ रिफंड टू माई कस्टमर बिकॉज उसने ज़्यादा पेमेंट कर दी है. तो मैं उसको लेट्स से वो 1000 के गुड सेल किए थे, 1000 की जगह उसने मुझे 1200 पे कर दी. सो 1200 इज़ एन ओवर पेमेंट. सो वील एक्चुअली रिटर्न $200 बैक टू हिम. सो दैट इज़ वाई दिस इज़ लाइक माई opening. It's like my customer, because of some reason, becomes my payable. Okay? So that's about it. Thank you so much.